So good evening all. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay, we will take very least time because tomorrow you are having exam. So you just you see uh, question will ask from module 3 and 4. Okay, midsem Yes, 2, sir. module 3 and 4. Midsem 1, module 1 and 2. Okay, so from module 3 and 4, I have given the question to you. Given or not? Module 3, module 4. Module 3, Module 4 questions are given to you PDF. You just go through that and you ask me your doubt. All of you open the PDF. First PDF, माने जोड़ा model question. Define reluctance of a magnetic circuit. Reluctance means which opposes the flow of flux. Okay. Reluctance means which opposes the flow of flux. So this is 2 marks question. Accordingly, you have to answer. You have to write in single line. Okay. Reluctance of a magnetic circuit is oppose the flow of flux in magnetic circuit. Okay. Reluctance in magnetic circuit is analogous to current in electric circuit. Okay. Similarly, what is the relation between, next question ta kono achi, what is the relation between permeability and reluctance? खातारे भी टिके टिके लिखि पकाओ. Okay. You can write in your copy also. Binuri, you take the screenshot of attendance. Okay. Those who are present. हाँ. समस्त नहीं मत कहब एक्चुअली जो मैंने अटेंड करना तो मार्क्स फार्क्स किसी दबार ना. फर्स्ट थिंग ही यू सी if you compare with your previous first semester students, okay, they have, number one is they have submitted the assignment. Near about 10 assignment you can submit. You can ask to कौन तांका ना सु स्वयं सुधा राउत, स्मिताली दास. ओके, तांका बेचर सब भल भल पिला सब थिले. They have submitted near about 10. Vishnu Priya Raut, okay, all hostelite, including your day scholar also. Sonali Sao in सब पिला थिले तुम फर्स्ट ईयर. सो 10-10टा असाइनमेंट सबमिट करछन हैला. तेणु we are bound to give award them outstanding mark. But for your batch, okay, number one is you have not submitted any assignment. Have you submitted? No, none of you submitted any assignment. Okay, so that is relaxation for you. Another thing, okay, you have got the ample opportunity that you have attend the online class. माने घरे रहिलो ऑनलाइन माने you have to develop yourself. Okay, सार कौन करछंदी, सार केमती शेयर करछंदी, so that accordingly you have to learn and you have to share. That means you have to impress. Okay, attendance तुम्हारा क्लास भी कम नहीं जाई छी काहे तुम many of you were absent. Okay, so award will be based on your impression, how you are impressing your teacher. Theory and laboratory both you will be accordingly be awarded. Okay, so how you will awarded? Module 3, module 4. Okay, what I am discussing you just write in gist in your copy. Within half an hour we can complete, and from that you will ask, you will get the question from in your exam. Okay, तापर सब क्वेश्चन गुड़ा ऑलरेडी शेयर कराई ग्रुप रे नहीं क्वेश्चन आंसर तेणु से सब पढ़ी है तापर जब न करा ताल कौन करवा
ओके स्वस्त्री वंदिता कौन Yes, sir. कौन मेसेज लेखा हो परीक्षा भल हम तो Sir, ଗୋଟେ long question କହୁନାହାନ୍ତି। लंग क्वेश्चन मु तो कहवाक ଆଜ୍ଞା। जाऊँगी आगुरी पूरा छानिया हेले कौन केमती हम आगे मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 मु जो क्वेश्चनटा देइछि देखुछ ना नहीं Yes, sir. हाँ से क्वेश्चन गुड़ा देख से देखी जान कौटा इम्पोर्टाट मुझे कह इम्पोर्टाट दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टाट एमि देखिए तुम जान मुझे कहबी यहीटा पढ़ी यहाँ पढ़ी कहीं कहबी तुम तो सेमिस्टर पूरा ठकिल तेणु मु तुमको सब स्टिल भी आई एम गिविंग द क्वेश्चंस along with the answers and from that you have to show your justice okay you have to show your justice तापर ये रेकर्डिंगटा मु शेयर करी तुम ऑटोमेटिकली जापर दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टाट फॉर योर सेमिस्टर ऑल्सो है ओके तेणु डिफाइन रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंसटा आम जाने डिफाइन कर रिलक्टेंस सिंबल है एस एसटा है एल बाई म्यू ए नहीं रिलेशन बिटवीन परमियाबिलिटी एंड रिलक्टेंस देखो सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट है रिलक्टेंस पढ़ला डिफाइन रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ओके रिलक्टेंस कौन लिखा रिलक्टेंस व्हिच अपोजिट्स द फ्लो ऑफ फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट ओके इट इज एनालॉगस टू रिलक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट ओके तेणु एमती आम कंपेयर कर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमियाबिलिटी एंड रिलक्टेंस इन ए मैग्नेटिक सर्किट रिलक्टेंस सिंबॉलिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय एस सो परमियाबिलिटी सिंबॉलिकली म्यू तेणु एस इक्वल्स टू एल बाई म्यू ए जमती रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्शन सो आर इक्वल्स टू एल बाई सिग्मा ए सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट कौन लिखा एस इक्वल्स टू एल बाई म्यू ए बिनुरी बुझी होची यू राइट स्पीड सब खातार लिखुच ना नहीं ओके सो ऑल ऑफ यू राइट इन जिस्ट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल केते इजी इजी क्वेश्चन देख लो यही भाया पड़ो जदि 100 ରୁ 100 रखा कथा रिलेटिव परमियाबिलिटी आम जाने म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू जीरो रिलेटिव परमियाबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन absolute permeability of any medium to absolute permeability of air or vacuum or space mu r equals to mu by mu zero इप्सिता बुझी होची mu r टा mu by mu zero ओके सर आउटर कोई mu संस्कृत r बुझिल तमे म्याओ लिखिदेवनी म्यू संस्कृत आर है कह रिलेटिव परमियाबिलिटी तुम प्लस 2 रे थिला तेणु म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू जीरो बुझीगला ना नहीं तेणु म्यूटा कह रिलेट माने म्यूटा है कौन एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ एनी मीडियम म्यू जीरोटा एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम और स्पेस ओके रोशन कुमार रोशन लिख रहे हैं तो यस सर सब लिखो क्विक लिखो हैं ये सब है खाली जस्ट यू गिव द हिंट्स एंड यू ट्राई टू रिकॉल हैं सो रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू जीरो डिफाइन मीन्स यू हैव टू डिफाइन लाइक दिस डिफाइंड एट द रेशियो बिटवीन absolute permeability of any medium to absolute permeability of air or vacuum or space mathematically mu r equals to mu by mu zero Srinivas
ये ऑन करिक बुलची कुआडे जाइक नहीं अच्छी सर ऑन हो नथला ऑन हो नथला काई सर मोबाइल पे ग्लिच होतला अच्छा एमिति क्वेश्चन इजी ना नहीं श्रीनिवास यस सर हाँ यस सर ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर ड्रॉप ब्रश ड्रॉप ऑफ ए डीसी शॉर्ट जनरेटर आम जदि ईएमएफ जनरेटेड इक्वेशन लिखा आर्मेचर ड्रॉप वी नो इन ए डीसी मशीन इक्विवेलेंट सर्किट इन ए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जनरेटर कौन कौन थाए यू सी वन इज योर थ्री डायमेंशनल पिक्चर कौन in a DC machine different parts are armature is the rotating part okay yoke is the fixed part try to recall Ipsita yes or no armature is the rotating Yes, sir. part of DC machine yoke माने upper part टा yoke provide mechanical support to the entire machine where we can connect the main pole pieces नहीं. So in between pole pieces armature is rotating. So while armature is rotating in between pole pieces in the uniform magnetic field according to Faraday's laws of electromagnetic induction EMF is generated. Question is asking 2 marks question कौन find the EMF generated in terms of armature drop. Armature means armature resistance is there. In laboratory armature resistance is very less, yes or no? So we can write Eg equals to V plus IARA plus brush drop. In last time exam semester exam बुझिल मत लगुच last time perhaps we have discussed like this से पिला सब क्वेश्चन आंसर देछन एमती बुझिल EMF generated पूरा लैंग्वेज लिखाई EMF generated is equals to टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर ड्रॉप पूरा लैंग्वेज लिखाई प्लस PLUS प्लस आर्मेचर ड्रॉप प्लस ब्रश ड्रॉप एमती लिखिया कथा कि आदिति 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 साहू ए ठकड़ा से कहो मोर Yes, sir. एमती लिखिया कथा EMF generated equals to terminal voltage plus brush drop plus ना कौन लिखिया कथा Eg equals to V plus IRA plus brush drop याको आमे कौन लैंग्वेज लिखिया कथा कि No, sir. Symbol रे लिखियो. सिंबल लिखिया कथा पिला किंतु परीक्षार म देखिली माने 80 खातारू देखिली 50 जन सेटा लिखिछंती माने घुसी देइछंती आ सार कहिछंती ठीक ना नहीं सार जे एमिति सार जा कहले पिला एकाले कंठस्थ मुखस्थ गलस्थ परीक्षार भी सही बुझिल परीक्षार लेखस्थ पूरा एकाले पूरा एकदम माने कहीं आम कहे वोल्टेज करेन्ट बोथ आर इन सेम फेज तेणु पिला भी जानले केतले भल पावर कंज्यूम हम बेसी पावर कंज्यूम हम अंडर व्हाट कंडीशन सार जहाँ कहले D2 से लिखिदे मोर पावर कैन कंज्यूम एटा हम ना के ओके सो यू हैव टू राइट इन फॉर्मूला फाइंड द EMF जनरेटर PDF टा देखुछ ना नहीं ऑल ऑफ यू आर बिंग PDF Yes, sir. देखुछ. हाँ से PDF टा Yes, देख आउ सब अनम्यूट करथा मु जाक पचारि माने धाई ना कहबो हैला so find the EMF generated in terms of armature drop and brush drop of a DC shunt generator so Eg equals to V plus IARA V टा कौन टर्मिनल वोल्टेज across the load नहीं आउ IARA टा कौन IA टा हला आर्मेचर करंट RA टा हला आर्मेचर रेजिस्टेंस V plus IRA plus ब्रश ड्रॉप ब्रश माने कौन ब्रश बोले दांत घसा ब्रश नुह ब्रश माने कौन कार्बन ब्रश बिनुरी बुझी हो ना कार्बन ब्रश ये जो ब्रश टा मेड अप ऑफ कार्बन ओके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दैट current can flow through that easily
माने आर्मेचर टा बुली चली कम्यूटेटर इज फिक्स टू द आर्मेचर commutator is fixed to the armature, so while armature is rotating, commutator is rotating along with the armature. So while this is rotating, so brushes are fixed. Just to collect current from commutator means indirectly collect the current from armature. So function of brush is just felicitation of collection of current from commutator, that means indirectly from the armature conductor. Armature टा जो बुलिला माने so that current can based on Faraday law EMF is induced and EMF induced is given by E equals to V plus IRA plus brush drop. So जदि दीटा ब्रश थिबो always even number of brushes must be there, either 2 रहिबो or 4 or 6 एमती हैला. So 2 means, so allow 1 volt per brush means if 2 brushes are there, so 1 into 2 volt. Yes or no? So 2 mark question means only you have to write the formula is equals to V plus IRA plus brush drop. Okay, shunt generator. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन. आर्मेचर काम कौन, खाली बुलिबो. आर्मेचर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन. साजन कुमार, साजन. Yes, sir. Armature is the Rotating part of DC machine. Okay, very good. Thank you, sir. You have got 1 lakh, again you will get 1 lakh. Okay, if you will tell like this. Okay, so Yes. role of armature of a DC machine means this is the rotating part of a DC machine. Single line. What is the role of armature of a DC machine? Armature of a DC machine. Armature is the rotating part of a DC machine. Okay, nothing you have to write, only this line carries 2 marks. Okay, in which DC machine, next question, Ipsita, tell next question ta kono. In which decision we can use lap wounded armature? In which DC machine we can use lap wounded armature. Lap wounded armature आमे नबा कोंटी लो वोल्टेज हाई करंट. लैप वाइंडिंग टा where will preferable, लो वोल्टेज हाई करंट. मन रहिला लैप वाउंडेड आर्मेचर लो वोल्टेज हाई करंट मशीन, because E equals to P phi NZ by 60A. EMF equation of DC machine you can find 2 equations. One we can write in terms of armature drop and brush, in terms of armature drop and terminal voltage. Okay, Saurav Mohanty, we can find EMF equation in terms of number of pole, flux per pole, speed in RPM. इजी टा केते P phi NZ by 60A. मु जहाँ कहूँ टिके खातार लिखि पकूत है. आ सेम थिंग मु भी शेयर करी सब टिक मरा है क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो इज इक्वल्स टू P phi NZ by 60A. दिस इज वन फॉर्मूला. इज इक्वल्स टू P phi NZ by 60A. ओके, अनदर इज इक्वल्स टू इजी माने कौन, EMF जनरेटेड is equals to P phi NZ by 60A. Another formula V plus IARA plus brush drop. है जोटा P phi NZ by 60A means what? P टा number of pole, phi टा flux per pole, N टा speed in RPM, Z टा total number of armature conductors, और capital A टा कौन, number of parallel path. तेणु वेव वाइंडिंग रे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लेस, ए इक्वल्स टू 2 ओनली. लैप वाइंडिंग रे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल, ए इक्वल्स टू P. सो लैप वाउंडेड मशीन टा तमाने लो वोल्टेज हाई करंट. ओके, तापर नेक्स्ट आसो, how flux in a magnetic circuit is analogous to current in an electrical circuit. This is important. How flux in a magnetic circuit is analogous to current.
एटा आम फास्ट भी डिस्कस करथिलु एटा कोन अब आंसर यू कैन से एमएमएफ र काम है कौन व्हाट इज द रोल ऑफ एमएमएफ एमएमएफ मीन्स प्रोवाइड फ्लक्स ईएमएफ मीन्स प्रोवाइड करंट है सो फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट दिस इज द आंसर so what is the how flux in a magnetic circuit is analogous to current in electric circuit flux in a magnetic circuit is analogous to current in electric circuit because mmf equals to phi s एटी कौन हम emf equals to ir है तेणु से दैट्स व्हाई फ्लक्स आ फ्लक्सटा कौन flux is not actually flowing but current is actually flowing in a circuit flux means that is imaginary the influence can realized suppose a mosquito will bite you okay so the influence can realized आम तेणु पटास किना लगेले नहीं किंतु करेन्टा कौन करेन्टा टच कला माने करेन्ट फ्लो करियो ए सन करेन्टा एका दूर तार धरिक छिड़ा हेले बल्ब जलिबनी बल्ब कैनॉट ग्लो आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो यू कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस एगुड़ा सब खातार सब लिखब आंसर्स ओके यू हैव टू कलेक्ट एंड आई विल चेक योर कॉपी एज असाइनमेंट समस्त खाता देखी जहाँ खातार सब न क्वेश्चन आंसर्स असाइनमेंट रे जीरो बुझल असाइनमेंट सिंपली जीरो श्रीनिवास बुझीपार खातार आई विल चेक योर कॉपी आफ्टर ओवर ऑफ योर सेमिस्टर एग्जाम यू हैव टू सबमिट योर कॉपी ओके आफ्टर ओवर ऑफ चेकिंग यू कैन टेक हाँ ये जो मॉडल क्वेश्चन अच्छी सब क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर है जदि न ताले you will get 0 mark that's why this time I am not taking any assignment from you this is your assignment sir हाँ क्लास खातार करो नोट खातार तो हाँ नोट खातार तुमको तो this time no burden to you okay you have to submit everything in your class copy but with proper margin how assignment how I will evaluate you have to impress the teacher na okay सो विथ प्रॉपर मार्जिन खातार एमती गारई कि पान दुकान भाया सेमती दबनी पूरा मार्जिन फार्जिन पड़ो असाइनमेंट लिखा है पूरा बिगिनिंग मॉड्यूल 1 लो मॉड्यूल 4 जाए जहाँ क्वेश्चन अच्छी तार आंसर सब थी जमीन जहाँ डाउट यू कैन आस्क मी एनी डाउट यू कैन आस्क मी ओके रोशन कुमार क्लियर ओके तब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ कम्यूटेटर commutator means commutator is always fixed to the armature commutator is always fixed to the armature okay so role of commutator is what converting AC to DC or vice versa commutator is made up of drop fused copper segment each must be insulated from each other by mica insulation okay I have discussed in class okay so this is your commutator what is the use of commutator draw the equivalent circuit diagram of a DC shunt generator DC shunt generator field winding connected in parallel middle one le armature rahila okay and another load terminal we have already discussed in the class and in laboratory class equivalent circuit of a DC shunt generator any doubt you can ask me also later on okay then what do you mean by no load saturation characteristic of a DC shunt generator एटा मॉड्यूल 3 रो लास्ट क्वेश्चन ओके एटा सब शॉर्ट क्वेश्चन पड़ियो हां सो नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स also known as magnetization characteristics no load saturation characteristics also known as magnetization characteristics बुझीगला no load saturation characteristics known as magnetization characteristics which can be drawn between no load EMF versus field current
E0 versus IF. We have done a practical class based on this. Okay. Pratyasha Mishra. Practical करथिलो एटा no load saturation characteristics under no load condition. Okay, when there is no load, we have to draw the diagram between no load EMF versus field current. Even if field current is zero, there is some voltage, that is residual voltage, retentivity of the material. हमें BH curve जो नोथले नो कि, so basing on this BH curve also you can draw. So this is your no load saturation characteristics. Okay, we are increasing the value of field current. Initially, even if there is some field current, but while field current is zero, there is some voltage. Then we are increasing. Okay, we are increasing the field current. So corresponding EMF also increases, and we will find some instant. After that, even if you will increase the value of current, but value of B remain constant. सेटा कौन कहले saturation. फील्ड करंट बढ़ेले भी अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे करंट को, ओके, बट वैल्यू ऑफ बी रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो दिस वी कैन फाइंड फ्रॉम योर बी एच कर्व, बी वर्सेस एच. ओके, so this is your no load saturation curve. Why no load saturation? Because we are taking the curve under no load condition of the generator. Okay, तापर नेक्स्ट देखो ये कॉइल ये जो BH कर्व. ओके, मॉड्यूल 3 देखो एक्सप्लेन BH कर्व है मैग्नेटिक मटेरियल. BH कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. BH कर्व, okay, you have explained, we have explained in the class. Okay, very nicely you have explained, and you have perhaps you have all of you understood BH curve. Another problem is given there. Okay, we have done that problem in the class, and the solution is given here also. I have shared the PDF to you. Any doubt you can ask me. Similarly, you come to question number C, another problem basing on that. Okay, this is from your magnetic circuit. Question number D, this is the question based on your generator. This is important, very very important. 4-pole DC shunt generator with wave connected armature. Ipsita, 4-pole DC shunt generator मान what are given, 4-pole मान P equals to 4 given. Okay, DC shunt generator with wave connected armature. Wave connected means A equals to 2. Okay, load current given 100 ampere, so IL equals to 100. At 200 volt, that means V is given. Armature resistance is 0.01 ohm. Armature resistance Shunt field resistance is 8. Shunt field resistance is 80 ohm. Man RF is given. So find the total armature current and EMF generated. Okay. So this question also given in the PDF. Okay. You can see also. So we can find using the formula is equals to V plus IRA plus brush drop. is equals to V plus IRA plus brush drop है तेणु V plus Vटा माने टर्मिनाल वोल्टेज तो देइछि 200 वोल्ट. IA टा कोन फील्ड करंट प्लस लोड करंट शंट जनरेटर पई. फॉर शंट जनरेटर योर आर्मेचर करंट इक्वल्स टू लोड करंट प्लस शंट करंट. ओके, सो योर load current given. Okay, and armature current equals to load current plus shunt current. So load current is given. So how to find shunt current? Shunt current equals to V by RSH. Shunt resistance देइछि केते 80 ohm.
terminal voltage is 200 volt, 200 by 80, that is your ISH. So IA will be IL plus ISH. Okay, IA will be IL plus ISH. So easy question, so you can answer. Is equals to V plus total armature current. Armature current we can find IA equals to IL plus ISH. Okay, and your EMF generated is equals to V plus IRA, V plus IRA plus brush drop. Brush drop so not given here, so neglected. Next question, briefly explain about the different parts of DC machine. Different parts we have discussed in the class. Armature is the rotating part of DC machine. Okay, armature having cylindrical structure, slotted armature. We can take a number of armature core. Finally, we have to bolted in form of cylindrical structure. Okay, which one is rotating in between pole pieces. So explain about the different parts of DC machine. Similarly, commutator, I told you, commutator is made up of drop thrust copper segment. Each must be insulated from each other by mica insulation. Okay. So different parts you have to write, and function of brush just to collect current from commutator or indirectly from your armature. Okay, so these you have to write different parts of DC machine. You have to explain with neat sketch. Okay, you have to draw the diagram. Then come to long question. Long question here you see. Question number 3. Okay, you will find total 30 mark. Question number 1 is compulsory. 5 question you will find, each carries 2 marks. So 5 into 2, 10 marks. Okay, question number 2, you have to answer any 2. Okay, out of 4 question you have to answer any 2. So all question you can find like this. Module 3rd question number 2, answer any 8 जो नहीं, you can find answer any 2 question, mid-sem 2. Okay, so out of 4 you have to answer 2 question only. Each carries 5 marks. 5 plus 5, 10. Okay, next come to question number 3. Question number 3, these are 10 marks question. Okay, here given 16 into 2, 32 marks. This is for your semester, but in your internal assessment you will find 10 marks. Okay, you have to answer 1 question only, but 1 question means we have asked माने कौन 5 समझ में आ रहा है. क्वेश्चन आस्क्ड 5 बुझल ना. तेणु एठी जमती पड़ी देख मॉड्यूल 3 क्वेश्चन नंबर 3 मृत्युंजय बुझी होची. क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल 3 यू सी I2I पड़ी ना नहीं एमतिया ए बी इन सेमिस्टर. Manish Kumar, in semester exam you can find this question 8 marks. Okay, in semester exam you can find this question 8 marks. For this mid-sem exam this question 5 marks only. Clear all of you? So answer any 1 question माने काली पड़िबो. Answer any 1 question. 1 question means you answer only A or B. मॉड्यूल 3 जो ए भी पढ़ी नहीं कि पूरा डिटो क्वेश्चन पढ़ी. ओके, आइदर ए पढ़ियो कि बी पढ़ियो, आइदर क्वेश्चन ए और बी. इफ क्वेश्चन ए विल आस्क्ड देन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. ए 4 पोल डीसी जनरेटर, फ्लक्स पर पोल इज 6 milliweber. Okay, there are 96 conductors.
This question given in the PDF I have shared to you. Page number 417. Question number 12. एटा PDF रे दिया है solution. Class रे also done that. Okay. 4-pole DC generator, flux per pole is 6 milliweber. There are 96 conductors. Wave connected. What is the induced voltage? So pole is given 4 pole. Flux per pole phi is 6 into 6 milliweber. Milliweber माने कितने? 6 into 10 to the power minus 3 weber. Total number of armature conductor माने Z. Z is given 96. Okay. A is given number of parallel path. Wave connected माने number of parallel path always 2. Okay. N is given n to माने speed in RPM. Given 1500 RPM. So induced voltage we can find is equals to P phi NZ by 60A. P is given 4 pole. Flux per pole phi is given 6 milliweber माने 6 into 10 to the power minus 3. Okay. रूपाली जानी होची इटा पेज नंबर 417 ले PDF रे दिया है क्वेश्चन नंबर 12. Okay. So easy we can find P phi NZ by 60A. Okay. तापर next question, derive the EMF equation of a DC machine. EMF equation you have to derive is equals to P phi NZ by 60A. Okay, you have done in your copy. How EMF can induce is equals to P phi NZ by 60A. Rate of change of flux direct proportional to EMF induced. So D phi माने for number of pole P, so P phi. Okay. P phi NZ by 60A. Z means total number of armature conductor. A माने number of parallel path. जो armature winding connected in, we can connect it in wave winding or lap winding. Okay. So that's why Z by A. P phi NZ by 60A. P phi NZ ऊपर रहिबो numerator, denominator 60A capital A, where A is your number of parallel path. So these you have to derive the EMF equation of DC machine. Okay. Similarly, question number B, explain about different methods of excitation of DC machine. Separately excited, self excited. Separately excited means field winding energized by separate source of current. Another is self excited. Okay, we will take our maximum 5-10 minutes. अच्छा, self excited कौन? Shunt generator, series generator, compound generator. Shunt generator we discussed. Okay. So theory that given to you, and from that you see. If doubt you are having, you can ask me. The next question given, a 4-pole generator running at 1500 RPM has 540 conductors. Flux per pole is 10 milliweber. Determine the induced EMF if the armature is lap connected and wave connected. 4-pole generator, then P is given 4. This question given in 417. Okay, PDF टा जो दिया है जी क्षेत्र पेज नंबर 417 ले क्वेश्चन नंबर 11 हेला ऊपर क्वेश्चन अपर क्वेश्चन 4-pole DC जनरेटर एक क्वेश्चन बीट ए सेटा अछि कोन क्वेश्चन नंबर 12 इन PDF. ओके आउ बीट बी एटा कोटा क्वेश्चन नंबर 11. Okay, Gauru Prasad. Okay, you can Yes, see sir. you can see the PDF. Questions answers Yes, sir. given there.
These are important. You try to solve. Okay. All question based on one formula is equals to P phi NZ by 60A. If lap winding A equals to P, mean number of parallel path equals to number of pole. If wave winding, number of parallel path always 2. Values are given now. Okay. So you can do. So it has come to module 4. Module 3 खाली कर देले 100%. फिर module 4 कले 200%. So module 4 come. What is the second question number 1 कौन अच्छी? Compulsory question, short question. What is the secondary to primary turn ratio of A? So secondary turn देजी primary turn. We can find V2 by V1. Then 12 by 230, that is your what? এটা কোন দিই secondary to primary turn ratio. Okay, N2 by N1 equals to V2 by V1. So V2 by V1 is 12 by 230. What is the transformation ratio? Voltage transformation ratio. Voltage transformation ratio कौन? Voltage transformation ratio is defined as the ratio between secondary voltage to primary voltage, secondary turn to primary turn. K equals to V2 by V1 equals to N2 by N1. Okay. ବିନୁରି ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଜାହିଦ ତେଣୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ବୁଝିଲ ଉପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର A କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର B ଏସବୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିଲ ଆଇଦର ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ ସବୁ ତ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେମ୍ ନା ଅଲଗା ବିନୁରି ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆରେ V2 by V1 ଏଠି ବି ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ରେସିଓ V2 by V1 ଓକେ ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଟ୍ ସି define synchronous speed of a 3-phase induction motor. Define synchronous speed. ଏବେ 3-phase induction motor ଆସିବ module 4 ତ ଚାଲିଛି ଆଉ module 3 ର କ'ଣ ଅଛି magnetic circuit and DC motor generator yes or no and module 4 transformer ଆଉ induction motor transformer and 3-phase induction motor okay so transformer question gala next है define synchronous speed of a 3-phase induction motor. Synchronous speed means synchronous speed is the speed at which the stator flux is revolving. Synchronous speed टा कौन गौरव प्रसाद synchronous speed is the speed Yes, sir. at which the stator flux is revolving. NS equals to 120F by P. ऑनलाइन क्लास रे हम डिस्कस करथिले NS equals to 120F by P where F is the supply frequency, P is the number of pole. बुझियो जी NS equals to 120F by P. ओके एटा हला सिंक्रोनस स्पीड गोटे हला सिंक्रोनस स्पीड आ गोटे हला रोटर स्पीड कहीं इंडक्शन मोटर व्हाइल कनेक्टेड टू द 3-phase सप्लाई ओके व्हाइल इंडक्शन मोटर connected to the 3-phase supply a rotating flux of constant magnitude which rotates at synchronous speed is set up and that flux passes through the air gap and cuts the rotor conductor which is at stationary and based on Faraday's laws of electromagnetic induction EMF is induced and when a current carrying conductor placed in the magnetic field a force will experienced by the rotor conductor so gross torque developed by the motor. So in this way electrical energy converted to mechanical energy. ये जो सब वटा कल फ्लोर मिल राइस मिल
सब जो मोटर सब लगे से गुड़ा सब 3 फेज इंडक्शन मोटर है। डीसी मोटरटा गोटे कंडक्शन मोटर किंतु इंडक्शन मोटरटा दिस इज ए इंडक्शन मोटर माने बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इंडक्शन मोटर आ जो ट्रांसफॉर्मर आम कंपेयर करवा कौन पाइबा दैट से कौन हो ट्रांसफॉर्मर रे माने ट्रांसफॉर्मर स्टैटिक डिवाइस बट इंडक्शन मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस। ओके सो व्हाट इज स्लीप स्पीड? स्लीप स्पीड माने स्लीप स्पीड इज सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड ns माइनस n। Okay, sleep speed, difference between the sleep speed, sorry, difference between the synchronous speed minus rotor speed is sleep speed. तापर next question, how to obtain the motor speed? Motor speed माने that is rotor speed. साइकेल चक्कर स्पीड जे साइकेल स्पीड आम कौन कहे बसटा एति किलोमीटर पर आवर चली बस कौन चलती ना चक चलती ना एक्चुअली चक इज मूविंग योर व्हील इज मूविंग yes or no? Okay, if Yes. wheel is moving, Yes, sir. wheel is moving किंतु आमे कौन कहे बसटा एतिक स्पीड चलती आम कहे गाड़ीटा टी स्पीड चला अरे गाड़ी कौन चला चक चला कहले ठीक हम ठीक ना नहीं इफ चक इज मूविंग so accordingly we can say this is running this much kilometer per hour. Okay, so here how to obtain the motor speed? Motor speed mane that is your rotor speed. So this is very important question how to obtain the motor speed? Tale motor speed केमिति पाइबा? Motor speed n equals to ns into 1 minus s. मोटर स्पीड माने रोटर स्पीड एन इक्वल्स टू एनआर एनआर इक्वल्स टू एनएस इंटू 1 माइनस एस से पीडीएफ रे सब देछि देख क्वेश्चन नंबर 14 15 हैला ए सब क्वेश्चन देखले तुम सब जानि परियो पीडीएफ पेज नंबर 418। ओके ये सब डीसी मशीन आउ एसी मशीन सब क्वेश्चन आंसर दे दीजिए आम जदि प्रॉब्लमटा बुझीजा प्रॉब्लम तो फुल मार्क अगेन वन्स यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सो यू कैन अंडरस्टैंड द थियोरी। ओके सजन कुमार तुम्हारा फर्स्ट ईयर में जो Yes. है दोस्त लोग उधर हॉस्टल में हैं उनको ये सब Yes, बहुत sir. अच्छा से पता है ये सब यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद देम ये क्या ऐसे ऐसे बोल देंगे हो जाएगा ठीक है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर 14 गिवन हियर क्वेश्चन गिवन सॉल्यूशन इज गिवन डायरेक्टली यू विल गेट द फुल मार्क सो यू सी द क्वेश्चंस एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी द डाउट इफ यू आर हैविंग। ओके यू कैन मीट मी एट 10 PM ओके Yes, sir. then next is how to obtain the motor speed? Motor speed माने rotor speed that is n equals to ns into 1 minus s. Okay, then calculate the sleep of a 6-pole induction motor running at 960 rpm drawing a power of 50 hertz 3 phase balance source। ताले sleep टा किंतु बाहर करिया sleep equals to that is ns minus n by ns. So ns how to find 120 f by p synchronous speed 120 f by p f is given 50 hertz p is given 4 so 120 into 50 by 4 ये सब संबित बड़ ये सब केते जन अच्छा ये सब सिंसियर उत्थान पाद ये सब रेगुलर जे क्लास करते से जानते सो many students are there anyway तापर नेक्स्ट आसला कौन गिव द एग्जांपल ऑफ 2 एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस ट्रांसफॉर्मर इज एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस
because electrical converter to electrical. Your generator is a energy conversion device, yes or no? Mechanical converter to electrical. So these are all energy conversion device. Motor is a energy conversion device. Electrical converted to mechanical. Okay. So question number G over. Give example of two energy conversion device. Question number H. Question number H. Question number H टा देखुछ ना नहीं? Actually इधर share करिले वाले अच्छा. Question number H. Question number H. What are the various losses we can find in a transformer? One is your iron loss, another copper loss. Okay, iron loss, copper loss. Transformer to static device, no rotational loss. How many types of transformers are there? Transformer, step down transformer, step up transformer, core type transformer, cell type transformer. Accordingly you can write. Okay. Then come to module 4, long questions. So these are the short questions you can find. Transformer ratio, how to obtain the motor speed, what are the various types of transformer. It is a short question. How a 3-phase induction motor can compare with a transformer. Answer will be induction motor assuming is a transformer whose stator is primary, rotor is short circuited, rotating secondary. एमती लिखियो हैं. तापर एबे लॉन्ग क्वेश्चन आसो. लॉन्ग क्वेश्चन सइला तो नहीं. Derive the EMF equation of a single phase transformer. EMF equation हमें कौन derive करथिले? E equals to P phi NZ by 60A. तुम सब कंटेंट रे लिखि जो इंडेक्स रे पेज नंबर ट्रांसफार्मर देखि दबो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर EMF equation you go to that page, right? Okay, are you getting my point? सेमी सब देखि फटाफट आंसर करियो. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 40 प्राइमरी 1100 सेकेंडरी टर्न. 40 प्राइमरी 1100 सेकेंडरी टर्न. ये सब क्वेश्चन आंसर सब दिया है. 40 प्राइमरी एटा दिया है. आउट अनदर पीडीएफ इज देयर. से क्वेश्चन नंबर 5 रे आंसर अच्छे. सजन कुमार, you can see another PDF also. Yes, sir. Page number Yes, sir. 348. Sithre, in that you can find transformer has 40 primary, 1100 secondary turns. So there you can also see. It this is given in the second. Yes. It is number पे 348. 348. Single phase transformer has 40 primary and 1100 secondary turns. The net cross section area of the core is 500 centimeter square. Okay. If the primary winding to connected to 50 Hz 400 volt supply, calculate the value of maximum flux density in the core and the EMF induced in the secondary. ये पीडीएफ टा ओपन करो. ओपन देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीडीएफ रो हैला. पेज नंबर 348 रो अछि. N1 is given 40, N2 is given 1100, F equals to 50 Hz, everything given. अच्छा, E1 given 400 volt. We can find E2. How to find E2? We know EMF induced in primary transformer
E1 equals to 4.44 F N1 phi m. ये प्रॉब्लम के देखि पारछ U1 equals to 4.44 F N1 phi m. Phi m equals to we can find E1 by 4.44 F N1. Okay, all values are given. E1 400, F is 50 Hz, N1 40. So we can find phi m. Cross sectional area is given 500 into 10 to the power minus 4 meter square. So maximum flux density equals to Bm equals to phi m by A. Okay. So we know E2 by E1 equals to N2 by N1. Voltage transfer ratio. So basing on that we can find the value of E2. E2 will be N2 by N1 into E1. Page number 348. गौर प्रसाद भोक लगिलानी नो सर हाँ सर ना नो सर नो सर खाई जे एटा एटा जानी हो तो प्रॉब्लम टा 348 पेज नंबर से पीडीएफ टा ओपन ए करो सर तीटा पीडीएफ एका थर खोलछि तो सुगाई ओहो अच्छा गोटे मिनिमाइज कर दबा गोटे खोलियो एमती हो हला एसो बुझियला जहा सब जोड़ा कहूँ इंपोर्टेंट देखियो हां briefly explain about the construction of a transformer वाला briefly explain about thermal power generation need sketch एटा सेमिस्टर वाला देखियो briefly explain about the working principle of a three phase induction motor working principle of three phase induction motor I told you केमिति actually their stator and rotor stator is stationary rotor is rotating and your induction motor is we can compare with the transformer okay induction motor assuming as a generalized transformer whose stator is primary rotor side is short circuited rotating secondary and based on Faraday's laws of electromotive induction EMF induced in secondary so current is flowing once current carrying conductor placed in the magnetic field a force will experienced by the rotor conductor and gross torque developed by the motor. In this way electrical energy converted to mechanical energy. So while your stator is connected to three phase supply okay the revolving magnetic field rotates at synchronous speed is given by ns equals to 120 f by p where f is the supply frequency p is the number of poles n external 120 f by p synchronous speed अच्छा जो मोटर टा बुलिला while motor starts to rotate okay that will maintain a relative speed between the stator flux and rotor तेणु ns minus n टाको नेले स्लीप स्पीड है तेणु यहाँ को डिफरेन्स नब तेणु स्लीपटा है ns माइनस n बै ns आमर जो रोटर स्पीड दरकार nr इक्वल्स टू ns इंटू 1 माइनस s so this is easy next question very important three phase 50 Hz induction motor has 8 poles 8 poles if the full load slip is 2.5% determine the synchronous speed and rotor speed it is the previous you go to the previous one number 2 pdf 2 टा देखो a three phase 50 Hz induction motor has 8 poles এটা मैं conclude कर दो आगे कोड देइछि এটা 3 phase 4 এটা देखो पेज नंबर 44 केते नंबर 416 okay three phase 50 Hz induction motor has 8 poles second pdf टा गौरव प्रसाद second pdf टा खोली परचो यस सर 416 पेज रे देखिला
3 phase 50 Hz induction motor has 8 poles. If the full load slip is 2.5%, determine the synchronous speed, rotor speed, frequency of rotor current. Slow, it is what given? Frequency is given 50 Hz, P is given 8 pole, full load slip 0.025, 25% माने कौन 0.025. So synchronous speed is given by 120 F by P, 120 into 50 by 8, so 750 RPM. Rotor speed N equals to Ns into 1 minus S. Frequency of rotor current, slip times of supply frequency. Hey gala answer. Okay. Next question would similarly this 3 phase 4 pole induction से खाली सेमती फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट जो लिखा है सेती खाली लिखो एतिक लिखि देले 5 मार्क्स. Frequency of rotor current is slip times of supply frequency. कहीं आमर देख जिते मोटरटा बुलूची while motor starts to rotate, that will rotate at speed n rpm. Initially थिला synchronous speed, तेणु जो बुलियो को आरंभ कला गोटे रिलेटिव स्पीड मेंटेन कला. Question is why the rotor rotates in the same speed as that of the stator. कहीं बुलियो? Because due to the relative speed between the stator flux and rotor, the rotor rotates in the same direction as that of the stator. तेणु मोटर स्पीड है n, stator speed ns. Synchronous speed माने कौन? The speed at which stator flux is revolving. मोटर ऊपरटा जो है. Briefly explain with principle of a single phase transformer. Single phase transformer class रे हमर पढ़ा हैतिला. Okay, single phase transformer working principle, primary winding connected to the supply. Okay, based on self induction, EMF induced in primary. Okay, due to current flowing having n number of turns, so MMF will be produced, and due to the MMF that drives flux in magnetic circuit. Okay, that flux linking with both primary as well as secondary. So based on Faraday's laws of electromagnetic induction, based on self induction and as well as mutual induction, EMF induced in secondary. So in this way, electrical energy converted to electrical energy. Okay, transformer is a static electromagnetic device which transfer electrical power from one circuit to another without changing frequency remaining constant. दिनोरी सब अटेंडेंस नहीं चो स्क्रीनशॉट दिनोरी भोकल ओके विल कंक्लूड एबे सब जानिला कोटा क्वेश्चन आसीबो स्वस्त्री बंदिता से जाई सारियोने खाइयो अच्छी ना स्वस्त्री बंदिता अच्छी नहीं तार खाली लॉन्ग क्वेश्चन खाली कही देने सर खाली गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कही दे मुझे तो गोटे क्वेश्चन कहली इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माइट हैव एक्ट इन एग्जाम तेणु से अनुजाई तुम डिसाइड कर कौटा इम्पोर्टेंट कौटा परीक्षा आसो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट आई टोल्ड यू ओके सो नाउ विल कंक्लूड हैं आ कौन आ को सर इम्पोर्टेंट गुड़ा authority को important out now I am in recording mode पुणी important कौन कह important कह लगा ये जो क्वेश्चन गुड़ा बुझा हला जना पड़ला तो से गुड़ा important बुझिला आपण तो सब जंग बुझे देले